and determination. Namaskar. All right. Now, moving on to some other news that's coming in right now from Madhya Pradesh. In some breaking inputs coming from Chhindwara, the number of children who have lost their lives due to the consumption of cough syrup has now touched 20. Remember that cough syrup, cold reef, has been banned by at least 9 states and union territories in the country. Clearly, a very tragic increase in this number, as we are seeing that now 20 children have been reported dead due to this contaminated cough syrup in Chhindwara in Madhya Pradesh. Joining me is my colleague Chetan, who will give us some more updates on this story, how this number has actually increased. Chetan, अब हमें पता चल रहा है कि 20 बच्चों की मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश में ही इस कफ सिरप की वजह से। आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं, कौन से नए केसेस ये सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर के द्वारा कफ सिरप रिकमेंड की गई थी, उस कफ सिरप से कल तक हमने देखा कि कल 11 बजे तक जो अपडेट था वो 18 बच्चों का था। उसके बाद संख्या बढ़ी, कल शाम 4 बजे तक 19 बच्चे हो गए थे और देर रात एक बच्ची की मौत और हुई है, यदि यदुवंशी उस बच्ची का नाम है। 2 साल की मासूम आईसीयू में उसका उपचार चल रहा था नागपुर में। तो कुल मिलाकर आंकड़ा अब 20 पर पहुंच गया। 17 बच्चे छिंदवाड़ा के हैं, एक पांडुरना का है, तो हो गए 18 और 2 बच्चे बैतूल के हैं। तो संख्या कुल मिलाकर अब 20 पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने एक सिरप तो बैन किया था, इसके अलावा 2 अन्य सिरपों की भी सैंपल रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें भी बताया गया कि इस तरह के उसमें केमिकल्स मिले थे जो इंडस्ट्री इस्तेमाल में होते हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सिरप नहीं, बच्चों के लिए जहर था। डॉक्टर के द्वारा जहर बच्चों के लिए लिखा गया, दिया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब बच्चों की मौत की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये भी निर्देश दिए और आदेश जारी किया है कि जितने भी जो बच्चे हैं जिनका इलाज उपचार नागपुर के अस्पतालों में चल रहा है, उनका खर्चा अब राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा एक कमेटी भी गठित की गई है जो पूरी मॉनिटरिंग करेगी उनके इलाज की और उसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपेगी। तो कहा जा सकता है कि अभी कुछ बच्चे और हैं और संभावना बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 2 बच्चों की अभी स्थिति और बेहद ही गंभीर बनी हुई है। जिस तरीके से मासूमों की जब उन्होंने सिरप का इस्तेमाल किया, यूरिन की समस्या हुई, उसके बाद किडनी पूरी तरीके से फेल हुई, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। माता पिता, उनके परिजनों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा समय भी उन्हें कभी देखना पड़ेगा। हालांकि जो 2 कप सिरप और आए हैं जिनमें इस तरह के पदार्थ पाए गए हैं जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है, राज्य सरकार अब उन पर भी प्रदेश भर में बैन लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि कल से सर्चिंग स्वास्थ्य विभाग और जो ड्रग विभाग है उनके अधिकारियों ने कर दी है। जहां जहां सैंपल लो स्टॉक है वो जब्त कर लिए गए। हालांकि तमाम ऐसे सिरप जो अनेक कंपनियों के हैं, सेम ड्रग में अनेक कंपनियों के सिरप और भी बाजारों में मौजूद हैं। तो राज्य सरकार की अब बड़ी चिंता है कि इन सिरपों के भी सैंपल कलेक्ट किए जाए ताकि जांच की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। जी, धन्यवाद चेतन हमें जानकारी देने के लिए। Moving on to some more inputs that's coming in on this story, a special investigation team looking into the case of the death of children due to the cough syrup consumption has now arrived in Tamil Nadu. A 12-member team is all set to begin its investigation. This comes after a 7-member team led by Parasya SDOP Jitrendra Jatt arrived in Kanchipuram, Tamil Nadu. Remember, a cyber team from Chhindwara along with other police officers is also in Tamil Nadu. My colleague Belly Thomas is live with us to help us understand how this entire investigation will go forward in this case. Belly, we are seeing how right now the SIT has reached Tamil Nadu. We know that this entire manufacturing of this contaminated drug actually took place in Tamil Nadu, and that's why the special investigation team along with other 12 members and 7-member teams have reached Kanchipuram in Tamil Nadu. What more updates could you give us?
Shivani, this pharmaceutical company situated in Kanchipuram is on radar now. It's on the, it has become the eye of the storm, and a special investigation team, a 12-member team, is all set to begin its investigation after this team has arrived in Kanchipuram, and it is looking into a case of the death of children due to the cold syrup consumption. This comes after a 7-member team that was led by Parasia SDOP Jitendra Jat. They have arrived in Tamil Nadu's Kanchipuram district. And we also know that earlier a cyber team from Chindwara along with other police officers were also in Tamil Nadu. So they would be investigating into as to how these people were manufacturing this cough syrup. Is that with the drug controllers license and other legal formalities that they were following, and the components that they were using in manufacturing that cold syrup is what is being looking into as of now. But police sources say that the SIT has reached as of now, and they have started their they will be starting their investigations into the manufacturing methods of this cold syrup is what we gather as of now, Shivani. Right. Belly, thank you so much. Please keep tracking the developments coming out of the investigation that